Hello students of level 5, Assalamu alaikum. Today is your SST class and we are going to read about the plateaus, hills, rivers, lakes and waterfall. As you know, last time we read all these pages. We are going to start from here. Plateaus. Plateaus are high level grounds of hard layered land that has a broad and flat platform or tableland. Many years ago, these may have been mountains that eroded and weathered the weaker rocks at the top layer. So plateaus कैसे होते हैं? थोड़े से हाई लेवल के होंगे, बिल्कुल माउंटेन जिस तरह हाई नहीं होंगे, एंड दे आर हार्ड लेयर मीन सख्त रॉक टाइप, ठीक है. और हाउ दे आर फॉर्म्ड, उसके बारे में ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि माउंटेन्स जब इरोड हुए, माउंटेन्स जब ख़त्म हुए, वेदर और रॉक्स जब इनके अलग हुए, तो जो सख्त इरोडेड एंड वेदर द वीकर रॉक्स एट द टॉप लेयर, तो वीकर रॉक्स टॉप लेयर पर आए. 45% ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लेटोज, यानी 45% ऑफ द अर्थ इज़ ऑफ प्लेटोज. प्लेटोज कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय अपवेलिंग ऑफ वॉल्केनिक मैग्मास. सो वॉल्केनोज़ का आपको पता है, उसकी वजह से भी प्लेटोज कैन बी फॉर्म्ड. द बलोचिस्तान प्लेटो एंड द पोटोहार प्लेटो इन पंजाब आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लैंडफॉर्म इन पाकिस्तान. अगर इफ़ यू हैव विजिटेड बलोचिस्तान तो आपको पता चलेगा प्लेटोज़ किस तरीके के होते हैं. दे आर ड्राई, ठीक है, दे आर हार्ड एंड दे आर अ लिटिल बिट हाई. लेट्स कम टू हिल्स. Hills are areas of higher altitude which rise above the rest of the land. So hills are very easy. You must have seen in movies. You must have been gone to the northern areas. So hills are like Margala Hill in Islamabad is an example. Hills are made up of harder rocks and are more resistant to erosion. Resistant to erosion means यानी erode इतनी easily नहीं होती, ठीक है, resist करती हैं. समटाइम हिल्स लाई अंडर ग्रेट माउंटेन रेंजेस. और हिल्स क्या, बड़ी जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, जो ज़्यादा हाई होती हैं, उनके पास होती हैं, उनके साथ होती हैं. दीज आर नोन एज फुट हिल्स. इनको क्या बोला जाता है? फुट हिल्स, बिकॉज दे आर एट द फुट ऑफ द माउंटेन रेंजेस. पाकिस्तान हैज़ मैनी हिली रेंजेस सच एज मरगला हिल्स, किथार हिल्स एंड मरी हिल्स. आई होप यू हैव विजिटेड Murray and you must have seen many hills there. Rivers. A river is a natural stream of water that flows into the sea or a lake. So river के बारे में we all know what are rivers. Rivers are formed when the ice and the snow melts and flow down from the mountains towards the lowlands of the valley and the plains. So when the snow melts from the northern areas, it passes through the it passes and it forms lakes and rivers. The longest river in the world is the Nile in Egypt. So river Nile is the longest river. The Indus river is the longest river in Pakistan. So our river is Indus is the longest. Lakes. Lakes are large bodies of water surrounded by land. So you can see this. This is a lake. You can see this is not a river, this is not a sea, this is lake. Lakes are formed in lowlands of valley or plain. The water source of a lake is rainfall or drainage of rivers or stream. जहाँ river का पानी चला जाए या rainfall, इनका source of formation क्या होता है? What is the difference between river and lake? इनका source of formation snow है, ठीक है, इनका source of formation rain है, या फिर river का पानी कहीं ड्रेन हो जाए, कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए, उनको लेक्स बोलेंगे. द वाटर इन लेक इज़ यूजुअली स्टिल, मतलब ये स्टैंडिंग होता है, ये ज़्यादा मूविंग नहीं होता, अनलाइक रिवर्स, एज अपोज टू रिवर्स विच आर यूजुअली फ्लोइंग. वाटरफॉल. अ वाटरफॉल इज़ अ प्लेस वेयर द फ्लो ऑफ रिवर ड्रॉप्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट फ्रॉम क्लिफ. The Angel Falls in Venezuela and the Ingla Falls in Congo and Victoria Falls in Africa are considered to be some of the largest waterfalls in the world. So waterfall is from a high place the water falls and goes into the river. You can see over here, this is a beautiful waterfall and there are many waterfalls in Pakistan as well. So I hope you have seen it. Springs.
The earth's surface absorbs rainwater. When there is abundance of rain, the water accumulates and flows. This is known as natural spring. So when the water is like जब water बहुत ज़्यादा हो जाता है rain का, तो it accumulates, ये जमा होके it forms a natural spring. The water from a spring is rich in minerals and is very clean and healthy for drinking. So you can see this is a spring and the water of this is full of minerals and you can drink it. Some natural springs, however, have a high content of minerals such as sulfur and other metals. The water for such spring is good for bathing but not for drinking. So, जिनमें high sulfate है, ज़्यादा minerals है, it's not good for like drinking. You can take bath. So, students, till for today, it is enough. I hope you will read all this and understand it. And thank you for today. In the next lecture,